thank you so much guys for coming here early morning. मास्क वास्क पहन के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लॉकडाउन में सबका वेट बढ़ गया, हर चीज खा रही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यार लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्यों एकदम मक्खन लाइफ क्यों नहीं जा सकती थी? मतलब गाड़ी चला रहे, ट्रैफिक नहीं है, मुंबई की सड़कें चौड़ी हैं, शॉपिंग करो तो पैसे नहीं देते, क्यों नहीं? एनीवन? Okay, cool. So I'm going to take the next 17 minutes of your life and we'll try and answer this question. कि यार life में problems क्यों हैं? So let me officially introduce myself. My name is Mahir Pandey. I'm the first and the only male to be titled as top model India in this country. But most importantly, I'm a little chubby guy who back in school was scared to talk to people. That मोटा बच्चा of class who got bullied. मजे कोई भी आता मार के चला जाता। I was that kid. That kid who would just stand in the mirror, in front of the mirror, talking to himself, and be like, while putting his badges on, like a soldier prepping for war, and be like, you can get through. I am one of those million who would go through every day like it was a task. We're a breed, just like you are, and they call us survivors. So if survival is an art, let's talk about the artist. Who is a survivor? Anyone? Anyone would like to tell me who's a survivor? Any hands? Yes, please. Who's a survivor? The fittest, if you say so. So let me just give you an example and explain this. कभी छोटे बच्चे को देखा है? A newborn baby. The first time he's trying to speak, that first word out of his mouth, माँ बाप, अटकता है, गलती करता है. But the first moment he comes through that task, struggle करते हुए, मेहनत करते हुए, अटकते हुए, गलतियां करते हुए, the moment he speaks that first word, he becomes a survivor. Now, when I tell people कि यार बच्चा है, वो survivor है, people start comparing. So I always tell them कि someone who's standing at the border, a soldier, to a vegetable seller जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए रोज काम करता है, he's a survivor. Someone who's a CA with massive calculations to a kid who's still learning 2 plus 2 क्या है, is a survivor. And when I tell them this, people are like, हाँ यार soldier survivor है, vegetable seller survivor है, but 2 plus 2 तो सबको आता है यार, वो survivor थोड़ी है. So I say the next few lines is always my answer. जैसे किसी की खुशियों की कोई उमंग नहीं होती, जैसे किसी की खुशियों की कोई उमंग नहीं होती, वैसे ही छोटी या बड़ी किसी की जंग नहीं होती. You cannot go up to someone and tell them कि भाई तेरी स्ट्रगल जो है ना, वो स्ट्रगल है, बट छोटी है, मेरी ज़्यादा थी. और ये एक्चुअल लाइफ में होता है. हम किसी को बताते हैं यार लाइफ में, you know what happened, I went through this. So instead of someone telling you, oh shit, I'm proud of you, you've done a good job, they're like, हाँ तेरे साथ ये हुआ, पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी तो गाड़ी टूट गई थी, फट गई थी. They start comparing, and that's the worst possible thing you can do. So always remember, you cannot compare someone's struggle. I'll give you an example. Now this is my struggle. Might not be a big struggle as per you, but this is my struggle. So I'm still young, I'm learning. Back in 2017, I was still the same, but थोड़ा सा और बुरे सिनेरियो में मुझे एक्टर बना था. कैसे पता नहीं. मैं वो सब करता था जो मेरे बस का था. I would get up early in the morning, measure my meals, count my calories, जिम जाना, हम थिएटर में जो वर्कशॉप में एक्सरसाइज करते थे एवरी डे वो प्रैक्टिस करना, शीशे के सामने खड़े होके मोनोलॉग्स बोलना, ऑडिशन देने जाना. आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा, व्हिच इज नॉट इन दिल्ली. जो लोग बोलते हैं दिल्ली में थप्पड़ मारना. सो नोएडा से मेट्रो बस लेके हम लोग जाते थे नेहरू प्लेस, व्हिच इज इन दिल्ली, ऑडिशंस देते थे और मस्त एकदम फुल फॉर्म में कॉन्फिडेंस के साथ रिजेक्ट होके वापस आ जाते थे. कुछ नहीं होता था, बट करते रहते थे, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट थिंग आई कुड डू. एंड आई वाज इन द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ. मतलब एकदम बढ़िया एब्स लेके, जैसे टिपिकल दिल्ली बॉयज होते हैं, घूमते थे अपने, बट कुछ नहीं होता था. द सेम ईयर 2017, आई स्टिल रिमेंबर, नवंबर में आई गॉट डाउन विद डेंगू. एंड सेम ईयर में सेकंड टाइम हुआ था. सो आई वाज एक्सट्रीमली वीक, हॉस्पिटल में था, और रैंडमली मेरे को कॉल आता है, हाय माहिर, यस, remember you gave this audition? I was like, yeah. You've been shortlisted for it. मैं खुश, मैंने कहा, बॉलीवुड चांस. फिर एकदम से हिट करा तो डेंगू.
you're weak, you're on the hospital bed. अब तो next round audition देगा भी तो obviously gonna get rejected. So जितनी भी motivation थी सब नीचे. 26th November, I get a call. Mahir, you've been selected and you've seen America's Next Top Model. I was like, yes, yes, yes. So the same makers are making an international show, English reality show. It's called Top Model India. You have to fly down on the 29th. मुझे खुश होना चाहिए था, but मैं इतना demotivated था कि मैंने कहा यार, it's an international show. Season pros होंगे सब. और I didn't even turn 21 तब तक. I was 20 years old. I was like, मैं कैसे करूँगा? That moment, my dad, being a typical Punjabi dad, he comes up to me. He's like, कोई नहीं, eliminate हुआ, sponsored Punjabi को, sponsored Mumbai की trip समझ के हुआ. I was like, चलो. So the aim was कि first elimination round में बाहर नहीं होना. इज्जत बचाने के लिए. First में pass हो गया, I survived. Second survived, third survived. I ended up winning the show. I go to Bollywood parties and everyone and everything, but all of this because of one decision. That is, when everything seems dull and low, मतलब लगता है कि कोई chance नहीं है, just don't stop. Because definitely जब तुम कुछ करो ना करो, कुछ हो ना हो, if you stop, definitely कुछ नहीं होगा. So why not just give it a shot? So the first thing you got to remember is, who's a survivor? The one who never stops. The one who, on a good day, is like, yes, I'm going to do it. But on a bad day, he's like, oh shit, I got to do it. Don't stop. Now, what is more important for a survivor? I'd say your perception. Life में problem आती है तो क्या करते हो तुम? Anyone? Think about possibilities. You think about? Possibilities. Okay. What I see around me is कोई problem आती है, oh shit. मम्मी मैं क्या करूँगा? People start cribbing. Instead of actually finding a way or analyzing, yeah, I can do this. Or maybe ये हो क्यों रहा है? People like, ये क्यों हो रहा है भगवान? They go in that zone. So take every problem as if it's an opportunity to learn, to get better, to grow. Sounds weird. No, I'm not drunk or stoned. I'm just telling you the facts. I'll give you an example. So today I'm standing here. I am what I am because of the problems I've had in my life. My English, it was horrible. School में मैं public speaking नहीं कर पाता था. English मुझे नहीं आती थी. I come from a Punjabi family. My grandmom was a principal, and she was a Hindi teacher. So घर में environment English का बिल्कुल भी नहीं था. और I used to, TPS में थे, everyone used to talk in English. I used to try, I used to fail, people used to laugh. A million mistakes, a billion laughs later, I'm standing here, I'm talking to you guys in English, but I'm still learning. But the fact is कि जब भी मैंने गलती करी, लोगों ने मजाक उड़ाया. जब लोगों ने मजाक उड़ाया, I took it to my heart. मुझे वो हर एक word याद है जब वो मजाक उड़ा के बोलते थे और किस चीज के लिए मजाक उड़ाया था. But the fact that उन्होंने मजाक उड़ाया था मुझे याद है, is the reason that I don't make the same mistakes again. Because तुम्हें जब दिल पे लगती है ना, when you break down mentally या emotionally, you tend to remember those things. So अगर वो hard times नहीं होते life में, या तुम्हारे साथ ऐसी चीजें नहीं होती जो तुम्हें याद रहें, which break you down, your breakups, whatever, तुम्हें वो चीजें याद नहीं रहेंगी. तुम grow नहीं करोगे. You will make sure that कि तुम वो same mistakes ना करो. So that's why mentality is very important. जब कोई problem आती है ना life में, be prepared because you're about to learn, because you're about to grow, you're about to do something जो तुम अपने comfort zone में कभी नहीं करोगे. That's very important. Second, perception. अब यार, sorry, mentality. Now what happens is, let me give you an example. तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें प्रेज करते हैं, खुश रहते हैं. You're earning. तुम अपने फैमिली को पैसे भेजते रहते हैं, हो हमारा बच्चा कमा रहा है. गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो, बाहर घुमाते हो, you get her gifts, you're like, oh my baby, I love you. She's very happy. Now tomorrow, you go and tell her and your family, you know what guys? I think I need a break. सब weird out हो जाएंगे कि यार क्या हो गया इसको? नशे में? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन. Everyone will stay calm, but 16 दिन ना सच जाके बोलेंगे तुम्हें.
you know what? ये करके देख यार ये अच्छा. You need to start earning. Girlfriend will be like, Mahir, you need to get serious in life. So different time. You are useful to them. You're doing well. But जहाँ तुम्हारी usefulness खत्म हुई, they'll start criticizing you. They'll start finding mistakes, faults. Isn't it? Perfect. So I'll quote something. Like the stone is unmoved by the wind. Like the stone is unmoved by the wind. The wise is unmoved by praise or criticism. जब कोई अच्छा काम करो लोग ताली बजाए ना तो चढ़ो मत. जो करते आए वो करते रहो. तो राह से उजरो नहीं, इधर उधर नहीं जाओ. और जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, अगर गलती हुई तो एनालाइज करो, करेक्ट करो और वैसे ही चलते रहो. गिरो मत. राह से फिर बिगड़ जाओ. So always remember that praise or criticism are expectations of the others. That third person जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली वैल्यू नहीं करता. जब तुम्हारे हार्ड टाइम्स होते हैं वो तुम्हें नहीं बोलता यू कैन डू वेल. वो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे लिए लड़ता नहीं है. There's only one person who's always standing with you, for you. That is you for yourself. So next time जब कोई डिमोटिवेट करे या कुछ ऐसा करने का मन करे नहीं लाइक लोग क्या सोचेंगे. कौन है यार ये लोग? किसके लिए ये? जब तुम अकेले रो रहे थे वो नहीं खड़े थे तुम्हारे साथ. There was only one person standing for you. That is yourself. So next time you want to do something, ask yourself, not the third person. Moving on. The most important thing in life, if survival is an art and survival is an artist, then all these problems are actually colors that you need to fulfill or make your painting that we call life. So remember, what's the most important thing? It is gratitude. I have a tattoo on my leg, which is in a different language, and it says, in order to be victorious in life, you have to have gratitude and be humble. In other words, उछलो मत, गिरो मत, और शुक्राना करते रहो. Always be thankful for life. Now you'll be like, yeah, I am thankful in life. मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कुछ होता है. 100% तुम बोलते हो, but you only thank God or Almighty for only the good things. भगवान जी थैंक यू मेरे अच्छे मार्क्स आ गए. All those things. कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए थैंकफुल नहीं होता. मैं हुए भी क्यों है ना प्रॉब्लम्स ही. तुम्हारे प्रॉब्लम्स के लिए कौन थैंकफुल होता है यार? मेरा बैग टूट गया इसमें क्या अच्छी बात है? That's the mentality. But always remember that all those wrong things, bad things, the problems in life are the reason you are what you are today. अगर मेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, मैं यहाँ खड़ा होकर बात नहीं करता, मेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, मैं इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाता, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, I would have been 140 kgs that I was. So problems are very important. They push you, they make you better. You outgrow yourself. So why do you have to be thankful? Is because अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. तुम वो चीजें नहीं करोगे जो आज तुम कर पा रहे हो. कोरोना वायरस नहीं होता, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, चाहे नाक के नीचे पहन रहे हो बट पहनते नहीं. So these things are important. And when I say this, I also mean that when you are thankful, when you have that mentality, when you have that perception, and you do not stop, you realize why problems are important. So answer to your question that why do we have problems in our life is so that you become the best version of yourself. Not to cry, not to cry, but to remember that you will get better. I'll quote Cristiano Ronaldo here, my favorite. You love me, I get better. You hate me, I become unstoppable. So may you prosper, may you grow, may you become the best version of yourself. Thank you so much, guys. That's my time.